So guys, just 15 days are left for the RBI Grade B Phase 2 examination, and now many of us are feeling that how to handle current affairs in this last 15 days, what should be our study plan, and the important things that will be in the mind of the student at this point of time is, first of all, to identify the weightage of current affairs in terms of ESI, FM and descriptive paper. Then we need to talk about that what are the important dimensions which you must focus on at this point of time with regards to ESI current affairs, FM current affairs, schemes, reports, and how to handle them. It is the important thing. Then how to tackle these dimensions with respect to different aspects of the examination, like how to tackle the dimensions in finance and management, how to tackle these dimensions in economic and social issues, how to tackle current affairs for descriptive answer writing, what could be the prominent sources where you should follow on or what you should follow at this point of time for your examination, and what could be a better study plan at this point of time in terms of consisting of revision, and what are the important things to keep in the mind in this last 15 days. This is what we're going to discuss in today's video. So guys, let's begin with this video, but before that, an important thing for all of you guys, we are providing you an RBI guidebook which is free of cost, which will help you in understanding the previous year question paper. Because as of now, if you have not looked at the PYQs, I would say that you are making a complete blunder here. Reason being that I might sound a little bit harsh, but guys, why? Because if you look at the paper of phase 2 of Reserve Bank of India, the important thing is you will try or you will find that there is no defined pattern specifically in economic and social issues. So you cannot say that if reports are coming, that only this year reports will be coming. It can be ESI, it can be government schemes. Similarly, in terms of finance and management, you should read the PYQs. You should go with the PYQs because that will give you an idea that it is not just static which is dominating here. Slowly and slowly, what we are observing here is that current affair is also playing an important role. So all these things you can analyze from the PYQs. Again, along with that, guys, you will get a small brief about the strategy, that how you guys can strategize your preparation. You will be getting a decoded syllabus also, the sources which you should follow. So this guidance can be taken at free of cost by you by downloading this guidebook. So please download that guidebook, okay, which is completely free of cost. Link for that is given in the description below. Now let's begin with my first question for the day. What is the weightage of current affairs if I talk about in terms of your ESI, FM and descriptive paper? Coming to the first part, that is economic and social issues, let's talk about the weightage here. Objective paper if I talk about here. So previous year if I talk about here, I have taken the 2024 examination here. Government schemes which were dominating in the year 2021-22. Then in 23, a dominance came a little bit down, okay? But in 2024, the surprising factor was there that again the questions from schemes got reduced here. So is it a trend that the question from schemes will be getting reduced, or is it the thing like that they are playing with the students to understand what could be asked? Now government schemes previous year there were 10 questions that were being asked, out of which there was 1 or 2 questions that were 2 marker. Majority of questions were 1 marker here. Coming to reports, report was something that was a dominating pillar previous year, because before that generally 3 to 4 questions comes in reports, but previous year it was all about reports. So that is something that you should be ready this year also. Then comes your economic and social issues current affairs, that is current affairs which are related to your syllabus. So there 3 questions have been asked in the examination. Now guys, on the contrary, if I talk about the finance and management paper of 2024, what we have witnessed 6 questions from current affairs related to syllabus, and all of these questions were related to SEBI initiatives. The questions were being asked. Then there was 1 question from RBI notification, or if I talk about here RBI related news, that was prominently from RBI annual report. So which tells us that in both the papers, yes, economic and social issues, it will be dominated by current affairs. But on contrary, if I talk about finance and management, I am not saying it's a dominating pillar, but still it is a very important pillar, because here if I talk about here, around 11 marks of paper out of 50 was from your current affairs, which means again here this 20% matters a lot here. Then if I talk about your descriptive paper, guys, okay ji. So descriptive if I talk about here, see, with respect to descriptive English, I will not be considering it because descriptive English is all about your application. There also the current affairs will be playing a prominent role, but I will not say that current affair is directly related to your descriptive English. They are asking you a broader parameter where you can quote current affairs. But if we say direct representation of your current affairs, you can see previous year under economic and social issues, there was a direct question that was asked on unit budget. Okay, ji.
Then there was a question asked on Digital India Initiative. So Digital India Mission, the question has been asked. The question has been asked on how the women's, if I talk about the rural women's participation can be enhanced here. This is what the questions have been asked. And before that, if I talk about 2022, 2023, 2021 examination, the questions have been asked on reports like they have asked question on report on currency and finance in 2023 examination. They have asked question on world development report already in the previous examinations. So that is why I said the PYQs are playing a prominent role, because they are giving you a hint whether if they are asking a question on a descriptive topic in any specific or in any important topic, if I say in any important pillar, whether only descriptive questions are being asked or whether they have asked objective also from the question from those reports which they were earlier asking under the descriptive section. Okay, so that is the first thing कि क्या आपको वही रिपोर्ट करनी है. अब यहाँ पे भी एक ट्रेंड आएगा जिसको हम अभी एनालाइज भी करेंगे आपके साथ, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स आपका हर पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, चाहे आप पेपर 1 ईएसआई की बात करें, अगर आप एफएम की बात करें, या फिर आप बात करें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की. ठीक है, सो दैट इज अबाउट वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन दिस एग्जामिनेशन. Let's talk about the second pillar. What are the dimensions now you have to focus on? Because I am again getting queries again and again. So do I have to read the general affairs like awards, persons in news? I always say give them a reply कि नहीं भाई वो नहीं पढ़ना. बट अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट कौन सी डायमेंशंस पे आपको फोकस करना और यहाँ पे भी क्या फोकस करना है. अगर हम बात करें डायमेंशंस की दोस्तों, तो हमने देखा आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स what are the important dimensions on which questions are being asked, and that questions can be asked in either a part of the current affairs. It's not that they will be asked only in ESI, they cannot be asked on FM, they can be asked either way. Okay, the first important dimension is government schemes, because schemes somehow are playing a very important role in this examination. Only previous year, if I just leave it here guys, 2023, if the weightage was reduced in ESI, it got its weightage in FM part. ठीक है, because there were paragraph based questions being asked here. So I would say schemes is an important pillar with regards to phase 2, so you cannot ignore that part. That is the first thing. Second, after that I would say reports and indices. ठीक है जी, because previous year ESI paper it was all about reports, so I would say reports are playing a prominent role here. Then I would say guys the RBI notifications, or you can say about RBI website here, they are important with the context of finance and management current affairs. And then I would say the current affairs which are related to your syllabus of ESI and FM. Now when I talk about syllabus of ESI and FM, I'm not talking about general topics like science and technology, awards, persons in news, obituaries. They are not relevant for the phase 2 examination because they are not asking questions. They are directly asking us question from those topics which are directly related to the syllabus of our economic and social issues here. Okay, so let's try to understand first thing that if I say we have to prepare government schemes. Now what to do in government schemes? Let's try to understand that thing. Okay, so you have a question that I have asked you here. In terms of questions that are being asked in government schemes, so there are basically 3 type of questions which you will witness here. One will be a normal direct questions that they will ask you. Second, they will ask you a paragraph based question. They will be giving you a paragraph. Based on that, they will ask you a scheme and they will ask you 4 to 5 questions based on a paragraph here. Third type is a case study based question where they will give you a certain sort of live example in front of you and they will ask you a question that whether that specific personality is eligible for that scheme or not, that if he wants to be eligible, what are the conditions he have to meet. So this is a case study based question that you will witness in your government schemes. So here is an example of PM Pranam scheme, the question that has been asked. So there was a paragraph given and one of the question was on PM Pranam scheme. Then I would say guys, a case study based question which I am showing you here. This is something very important because generally these are type of questions which we are not practicing in our phase 1 examination, and this is the need of the hour. So if you are going for phase 2, I would say practice case study based questions because they are very important for your examination. Okay, now how to tackle these questions? Again, I would say the basic lies in these dimensions only, because if I talk about the case study based questions, if I talk about paragraph based questions, the thing is the type of asking question has been changed, but again the thing that we are reading is same. So if I say here what is the thing they will be asking, they will be asking question basically on context of eligible beneficiaries. They are very important. So
first thing that I would say for every scheme, whatever you are reading, you should be confident or you should be able to understand who are actually eligible, because that would play a very important role in understanding the case study based question. After that, I would say the key features or objective of the scheme, because that is again giving you clarity. That is where they will be asking you a question in terms of your paragraph based questions, that what are the things that scheme is going to provide you here. That is, I would say, key features or objectives here. Then obviously if there is some certain set of updation has been done, some structuring has been changed, so that's a third part which you need to follow on here. Then after that, I would say the questions that are being asked, which I would say generally they were more important for phase 1, but for phase 2 they might ask you that question like which is the ministry here, which type of scheme is that, because generally if let's say the scheme was earlier a central sector scheme, but now it became a centrally sponsored scheme, so these sort of changes the questions can be asked. So that is the thing here. Okay, so these are the important dimensions which you have to cover when you are going for current affairs preparation. Okay, now let's try to understand with an example here. So there was a question answered PM Pranam scheme. Okay, PM Pranam scheme. Now if you look at the question here, the question has been asked first of all on the key features of the scheme here. Okay, then they have asked a question on the ministry of the scheme here, the nodal ministry of the scheme here, because PM Pranam, if I talk about here, PM Pranam is a scheme related to agriculture sector, but it is actually a scheme of Ministry of Chemicals and Fertilizers. So that is the thing here. That is why that was something that we were not expecting. Then they have asked a simple thing, identification of a scheme here. If you look at the case study based question, here again if I'm trying to say, if you look at this question here, if you look at this type of question, the important thing that is here is, here if you are not understood, if you are not able to understand the eligibility criteria, or you are not able to identify who are included, who are excluded. Specifically, I would say guys, inclusion you can understand, but if you are comfortable with exclusion, who is not actually included in that specific scheme, that would really help you in your government schemes part here. Okay, with respect to descriptive questions, so as of now we have not witnessed a descriptive question being asked on government schemes. So they are asking questions on government schemes, but generally in the objective paper of the examination, not on descriptive part. But I would say you can quote these government schemes in your descriptive answer writing as a fodder, because for descriptive this can be utilized as a fodder material here. Okay, so I hope the first part is clear how to understand the schemes here. Now what to cover in a scheme. Then comes the second part, reports here, because we're talking about reports and indices. Now first of all, when I talk about this dimension, the most important thing is which report you cannot skip, because majority of time you will see a question. It can be descriptive, it can be an objective paper, but you will see a question on these reports, those reports which you cannot miss. So these reports include, first of all, World Development Report, your economic survey, unit budget will be part here, RBI annual report, report on trends and progress of Bank in India report, IMF's World Economic Outlook, and then I would say the report that is report on currency and finance being given in your syllabus. So these are the reports which are the most important reports which you cannot leave. These so you have to go thoroughly, because this is where they can directly ask you a question. It can be a descriptive paper, it can be on the objective side here. Then if I talk about here, other than that, how to filter out the reports. Now the reports like Hurun India Index, Forbes India Index, they are not relevant for phase 2. So that to make a completely no here, because they are not relevant for phase 2. I would say the reports being released by prominent organizations like World Economic Forum, IMF, if they are releasing those reports, that is where the question can be asked to us in the examination. So they are important. And now here I would mention guys that if it's an international organization report, and if there is some national organization who is releasing a report where India is being showcasing something, I would say that report will be important for the examination. Okay, now the next important thing in this report, if you look at the question behind me, there is a question being asked on World Development Report, the report that is being given in the syllabus of the RBI, World Development Report. There were 4 questions being asked on this specific report, which means we have seen a question that is being a descriptive question asked on World Development Report. We have seen an objective question being asked on World Development Report here. Let's try to figure out the questions that have been asked. First of all, they have asked a question on Director of the World Development Report. My dear friends, every year RBI is asking some such questions, such silly questions or such questions which are completely being asked with an objective that you have to leave those questions, because
If you tell me this year, or if you ask me this year whether I should go with the name of the directors also, I would again say no, because the reason is simple. You have to figure out that where you are getting maximum return here. These are sort of questions which are being asked so that they can puzzle you guys. They can play with the FOMO that you're carrying in the examination, fear of missing out, and the most important thing, to basically apply your mind. This is something not that much. Obviously, I know each and every mark is very important here, but again, these sort of things you can leave. Then look at the question. Suggestions, strategies, recommendation is important. They have asked you a question. Then they have asked you how many middle income countries, which means if the World Development Report is there, it is talking about middle income trap, how many? Then comes the next important thing, India specific thing about India report. Now from that, I would say, if you look at the part here, how to go with the reports. First of all, obviously that is very important to understand who is releasing that specific report, because the question has been asked on Lancet study. And guys, again, one thing I would say, every year RBI used to ask a question on some private organizations. Generally, they are asking some question on reports which might be released 1 year back, I would say 1.5 years back. There again, I would say on these reports also, I wouldn't say go that much that, because इतना पुराना आपको पढ़ने का यहाँ पे रिटर्न ऑफ आउटपुट नहीं मिल रहा है. फिर आ जा रहे, देखिए रिलीज बाय, पहली बात तो ये पढ़ना कि रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है. दूसरा पढ़े अबाउट द रिपोर्ट, वेयर यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द parameters of that specific report, parameter of that report, ठीक है, what is the important thing that report is going to highlight that part. ठीक है, यहाँ पे आप थीम भी बोल सकते हो कि किस थीम पे वो रिपोर्ट रिलीज हुई है. जनरली those reports which are being given in the syllabus. Then I would say, talking about the important thing, ranking wise you should always understand about who has topped that specific report. ठीक है जी, what is the rank of India. In terms of India, you should be able to understand what is the rank of India in terms of different parameters also. Different parameters. Then global finding is something important. What is that specific thing? In terms of global finding, I would not say you have to cram the data. You should understand in terms of global finding what are the major changes being highlighted. For example, if you're talking about global gender gap report, and let's say they have written somewhere that for the first time US is not among top 10. So that is the important thing. Who is not among top 10? This is the important thing you need to find out. Understand, highlight. India specific findings, again important. Now for those reports which are clearly defined on syllabus, like World Development Report, World Economic Outlook, Report on Currency and Finance, Report on Trends and Progress of Banking in India, RBI Annual Report, these recommendations will be important. And here also, if it is India specific recommendation, that should be given more weightage here. Now here, if you look at the question here, they have asked a question on recommendation and they have asked a question on India specific part here. Okay, so that is these things I would say are important for the examination, how to approach the reports here. Then comes the next pillar, that is RBI notifications. Now in terms of RBI notifications, I would say I would list down some things that how you should focus here. First of all, try to talk about those reports which are some sort of launching pillar. What is launching pillar? Launching means RBI has launched some new initiative. That is something I would say is the number one part here. ठीक है जी? That is first part here. Then second part here will be if RBI has initiated or RBI has started some initiative where some changes have been made. So what are the changes that have been made? Changes or updates or recommendations that have been done. These are the notifications which should always be taken on number one part here. If RBI has launched a new initiative, a new working committee has been formed, I would say, let's take an example, free AI initiative of RBI is being seen in news. Those things should be taken on prior consideration. Second thing I would say here along with that is important here is the changes or updates. That is the thing here. What are the major changes being made? Because that is where they will be asking you a question here. If you look at the questions that have been asked here, obviously first thing is from the settlement timeline for debt securities and non-convertible bond was reduced from T6 to how many days? That's a part of our RBI annual report. The question being asked in previous examination. Look at the thing here. RBI has allowed pre-sanctional credit line via UPI. How is it a step towards financial inclusion? Now what they're asking you is, first of all, you should understand that this is the change they have announced. This is the change they have announced. Okay, so first thing is you should be able to understand what is the change that is here. Now,
If you understand the change, that's an applicability of you that is being asked in your descriptive question. How it will impact, because if you know what are the changes being made, you will be able to see that what is the point where they are actually helping in inclusion. That is how you could write this answer here. So point is that the things that you are reading is the same here. Same चीज ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कुछ अलग से पढ़ना है, पढ़ना वही है, बट थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को आई वुड से ब्रॉडर माइंडसेट से पढ़ना है. सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान मत दो, अब ब्रॉडर माइंडसेट से पढ़ो कि उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है. सेम गोज विद ये फाइनेंस करंट, जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स आल्सो, बिकॉज़ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड अगेन, अगर कोई नया रिफॉर्म्स लेके आ रहा है सेबी, कोई मेजर चेंज कर रहा है, तो वो जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. इन टर्म्स ऑफ ईएसए करंट अफेयर्स इफ आई टॉक अबाउट है द टॉपिक व्हिच इज बीइंग जनरली मेजरली बीइंग हाइलाइटेड, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, न्यूज हो रहा है, या इंडिया इज डूइंग समथिंग हियर. फॉर एग्जांपल जीएसटी रिफॉर्म्स, बिगर टॉपिक. So you should be able to cope up with GST not just in terms of current, you should be able to cope up with GST in terms of your static also. तो GST पढ़िए, GST करंट टॉपिक इस इंपॉर्टेंट है. ब्रिक्स इंडिया होस्ट कर रहा है तो ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है. क्वाड इंडिया होस्ट कर रहा है तो क्वाड इंपॉर्टेंट बन जाएगा. इस तरह से जो जो टॉपिक्स आपके पिछले 6 महीनों में न्यूज में है, उन पे आपको फोकस करना है, जो कि बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अगर तो इंडिया ने ही कुछ लॉन्च किया तो उसके चांस तो सबसे ज्यादा है, बिकॉज अगर आप देखो मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है जी, विच इज द इनिशिएटिव बीइंग स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन पिछले साल क्वेश्चन आया था ग्लोबल जेंडर फॉर अलायंस, ठीक है. तो ग्लोबल जेंडर फॉर अलायंस पे क्वेश्चन है, ये भी इंडिया ने स्टार्ट किया था वहां पे जाके. इंडिया नाउ दिस इनिशिएटिव, अगेन यू कैन सी हियर, India announces this initiative. So if India is participating somewhere, India is announcing some initiative, that initiatives will play a very important role. उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको इस बार. ये है ESI के लिए. आप डायमेंशन समझिए, आप फटाफट में समझते कि इनको डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे आपको यूटिलाइज करना. सबसे पहले बात करते हैं जी, ठीक है, बिफोर आई कम टू दिस पार्ट, टाइमलाइन. बिकॉज डायमेंशन हो गया, अब यार टाइमलाइन कितना चाहिए, कितने महीने पढ़ो सर, ये डर लगता है हमेशा. देखो मैं आपको बोलूंगा सेफर साइड पे 8 मंथ इज इनफ. अगर आप फेज 1 से आए तो आपने 5 मंथ्स पढ़े होंगे, 1 मंथ ऑफ दिस. नाउ आई वुड से अगर आप 8 मंथ्स करते तो वेरी गुड, तो आप नहीं तो 6 मंथ्स को टारगेट करो. यहां पे 6 मंथ्स, दैट इज फॉर योर ESI, RBI नोटिफिकेशंस, आई वुड से स्कीम्स, ठीक है जी, एंड योर ESI और FM करंट अफेयर्स. But if you talk me with regards to reports, here I would recommend you that you should target past 1 year. That is the important thing. Past 1 year को target करो. That would help you in making a very good thing. ठीक है जी. अब मैं बात करूं जो क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार गवर्नमेंट स्कीम्स में से, देखो 7 क्वेश्चंस पास 3 मंथ्स में से आए हैं, बट अगर 8 मंथ्स करते तो सारे के सारे टैकल हो जाते हैं. रिपोर्ट्स, ठीक है जी, 12 क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स, 5 क्वेश्चन 8 मंथ से बियॉन्ड थे, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर आप बात किए तो यहाँ पे अगेन 3 क्वेश्चन वर दोज व्हिच वर फ्रॉम पास्ट बियॉन्ड पास्ट 1 ईयर आल्सो. बट अगेन आई वुड से इफ यू आर कवरिंग पास्ट 1 ईयर, दैट वुड रियली हेल्प यू हियर, ठीक है. करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिलेबस, तो यहाँ पे भी अगर आप 8 मंथ्स को टारगेट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो 8 मंथ्स तक जाने की. बिकॉज पिछले साल एग्जाम में ट्रेंड में देखा चीज हमने कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे 7 to 8 मंथ, तो उनको भी छोड़ो मत. बिकॉज इफ यू आर अ पर्सन स्पेसिफिकली जिसको लग रहा है ESI इज वन थिंग वेयर आई कैन फेच मैक्सिमम मार्क्स, तो ये चीज याद रखना. बात करते हैं RBI के फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर. तो भाई यहाँ पे तो सारा का सारा पेपर है पिछले, अब मैं बात करूं पिछले 6 मंथ से ही पूछा गया था, तो दैट इज अ थिंग, ठीक है जी. अब हम मेरी बहन देख भी सकते हैं जो PM परिणाम क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर था हमारा अक्टूबर में और 27 अगस्त का ये न्यूज है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा टाइमलाइन. अब आते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अप्रोच करें. सबसे पहले बात करते हैं FM करंट अफेयर्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सेक्शन की जब बात करें तो वहां पे आपको करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है. डायमेंशंस वही रहेंगी, डायमेंशंस तो आप थोड़ा सा देखोगे तो डायमेंशंस वही रहेंगे, बट यहाँ पे अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना. आपको अपने सिलेबस से बाहर नहीं भागना, तो सिलेबस पे रहना. यहाँ पे देखो बहुत क्लियर कट डिफाइन किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज SEBI is now working really hard on their launching very new initiatives. So that's why I would say primary and secondary market will play an important role here. ठीक है जी. बाकी बजट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन बजट, ठीक है जी.
Then I would say recent development in the global financial system. So that is something I would say that is important here. Along with that, RBI notification. If you look at the questions that have been asked, I told you here 1 and 6 question. Look at the thing. Again, I would say अगर आप RBI notification की बात करो, जो चीज मैंने आपको पहले बताई है वही यहाँ पे बोलूंगा. Not I would say remember, try to cram every data, but I would say try to focus more on those things where some changes are being denoted. अगर वो changes बता रहे हैं, कुछ updates बता रहे हैं, वो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया भी है स्टार्टिंग में, तो वो इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, बात कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की. देखो फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में भी उन्होंने यही पूछा, अगर कुछ चेंज हुआ, SMREITs की लिमिट को चेंज किया गया था, तो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर. देन इफ आई टॉक अबाउट हियर, अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड. पिछली बार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है सेबी के ऊपर. अगेन इट वाज समहाउ शॉकर फॉर सम स्टूडेंट्स के सर क्या हो गया, बट आई वुड से यार इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने, ध्यान से क्वेश्चन समझना क्या क्या पूछा, हर क्वेश्चन को समझते हैं. मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट. So there have been changes, there have been amalgamation, there have been changes that have been introduced in terms of SEBI in context of your blockchain. Rule as a SEBI की. Method must be used. It is just talking about that if they are launching an initiative, उसमें करना क्या है? Maximum. What we are doing here? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? And date of implementation. Now it is not that you're cramming everything. It is that if you understand nothing. अगर मैं आपसे नॉर्मल कंटेक्स्ट में बोलूं, सेबी को इनिशिएटिव लेके आए, सेबी is saying, let's say सेबी has made some amendments into alternate investment fund rules. Let's take an example here. And सेबी is saying हमने alternate investment fund rules की सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया है. तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन कितनी बढ़ाई है. दूसरा क्वेश्चन, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते कितना, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को रेगुलेट कौन करता है, और ये रेगुलेशंस कब से इंप्लीमेंट होने वाली है. यही 4 क्वेश्चन मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, यही जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी बात होगी, यही इन्होंने भी पूछा है. सो इट इज नॉट दैट यू हैव टू जंप इनटू द फैक्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार अगर कोई गाइडलाइन है, बिकॉज अगर आपको इस पे डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े तो फिर भी आपको इसी माइंडसेट के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर मैं बात करूं स्कीम्स की, तो 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछे 5, पूछे कहां पे, स्कीम से. और स्कीम्स मैं बात करूं तो ऐसा नहीं डिफरेंट स्कीम्स आप पढ़ते हो, आपने यूपीएस पढ़ा है, एनपीएस पढ़ा है, ठीक है ना, अटल पेंशन योजना पढ़ा, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन यूनिफाइड पेंशन सिस्टम. अब वो हो सकता है कि वो इधर ना पूछे, वो फाइनेंस में पूछ ले, यूपीएस एनपीएस के ऊपर, बिकॉज चेंजेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन हियर आल्सो. एंड अगेन हियर इफ यू लुक एट द डायमेंशंस दैट आई हैव आस्क्ड यू, आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, की फीचर्स आर इंपॉर्टेंट, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ की फीचर. ठीक है जी, एलिजिबिलिटी, ठीक है, की फीचर एंड की फीचर, की फीचर एलिजिबिलिटी, की फीचर आइडेंटिफिकेशन. दिस इज वेयर दोज डायमेंशंस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. ठीक है, अब आपको एफएम में भी रेडी रहना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीआई पढ़ के जल्द नोटिफिकेशन. यू शुड बी थॉर अबाउट आरबीआई नोटिफिकेशन, यू शुड बी थॉर अबाउट योर फाइनेंशियल करंट अफेयर, यू शुड बी थॉर अबाउट योर गवर्नमेंट स्कीम्स, बिकॉज इट माइट बी अ थिंग they are not asking you question on schemes in the ESI part, but they are asking question on ESI schemes in the FM part. That can be a thing. Then let's talk about how to prepare ESI current affairs वाला part है. अब ESI क्योंकि क्या है, it's a dominating, because it's current affairs which are dominating here. But again, before I proceed with how to prepare current affairs for ESI section of the examination, I would say one thing very, very important, guys, that see as of now, there is no defined pattern of economic and social issues that we have witnessed here. If you look at the PYQs, you will try to figure out that 21, 22, it was government schemes which were dominating. They were hardly asking question on ESI current affairs or ESI reports, I would say. Hardly. ESI schemes ही dominate कर रही थी. फिर 2023 आया, where there was a mixture of some static questions, some reports questions, some current affairs based questions, some schemes. Weightage of schemes reduced a little bit. Then comes again a shocker. Reports came forward. So this year, if you're going with an examination, I would not say first of all you should leave this part. No, you should be ready with every part, because it might be a season where you will witness a question from ESI current affairs. Reports are very low, schemes are very low. It's all about ESI current affairs. So that can be a thing. Now that is something I would say before we talk about ESI. That is something you should be pretty much clear. Okay, do not leave anything or do not go with the mindset कि इसको छोड़ दूंगा. नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है, पूरा ध्यान से अच्छी तरह से इसको पढ़ना है. ठीक है, प्रीडोमिनेटली वही है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स. और अगर आपका सिलेबस आप थॉरो हो तो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग. ठीक है जी,
अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बात की कि क्वेश्चंस क्या आए थे, देखो पिछली बार भी ऐसा नहीं कि स्कीम से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर बीइंग 1 मार्क क्वेश्चंस हियर। रिपोर्ट्स डोमिनेटिंग, सो इट वाज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर 2 मार्कर्स हियर, ऑलमोस्ट 2 मार्क क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे करंट फर्स्ट टू सिलेबस, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस वर 2 मार्कर एंड 1 क्वेश्चन वाज ऑफ 1 मार्कर दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर ऑन हियर, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन ऑन स्कीम्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी स्कीम से पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा गया है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायमेंशंस वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसी सेम डायमेंशन पे देख के ना आंसर क्वेश्चन दिस है, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है स्कीम्स पे, ठीक है। स्कीम्स पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना दोस्तों, बिकॉज वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, दैट्स अगेन यू कैन सी हियर दैट वाज इन एग्जामिनेशन ऑफ 2022। 23 में भी एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, बट 23 से जो हमने ऑब्जर्व किया है, दे आर आस्किंग अ लॉट, आई वुड से मोर एंड मोर 1 मार्क क्वेश्चन ऑन स्कीम्स। ऊपर वाला जो मैं बात करूं तो वहां पे मिक्सचर चल रहा है, कुछ स्कीम्स स्टैटिक मिक्सचर चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स जैसे मैंने बोला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सिलेबस में ही मेंशन्ड है, तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। पिछली बार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, पेपर आपका अक्टूबर के आसपास हुआ था, अक्टूबर नवंबर के आसपास, पर जो आपकी एनुअल रिपोर्ट थी वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट थी, वो आई थी आपकी जनवरी में, तो अराउंड 9 मंथ्स के 8-9 मंथ्स के सीक्वेंस में क्वेश्चन आया था। दैट्स व्हाट आई वुड से, कि तभी मैं बोल रहा हूं आप 1 ईयर को टारगेट करके चलो, स्पेसिफिकली दोज रिपोर्ट्स व्हिच आर मेजर रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर रहा है, IMF रिलीज कर रहा है, दे आर इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है जी। अगेन रिपोर्ट्स की मैं बात करूं, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो आपके एग्जाम से पहले आई थी, और इस बार भी यही कुछ बना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हैज बीन रिलीज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, सो दैट आई वुड से शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो जो भी रिपोर्ट्स आपके एग्जाम से जस्ट पहले रिलीज हुई हैं उन पे फोकस करो, बिकॉज देखो वी वर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, क्वेश्चन नहीं आया। वी वर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, नहीं आया। डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट अभी आरबीआई ने निकाली है, तो उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया ही अभी है, अपडेट अभी हुआ है, तो you can expect a question on these reports in your phase 2 examination because they are just being released before the examination, so they are very very important, ठीक है। ESI करंट अफेयर्स पे देखिए, अभी तक ESI करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहा है, बट अगेन आई वुड से you should be reading this thing. For example, trade economic partnership agreement, it's a very hot topic this year, my friends, this year my friends, guys, because we have witnessed a question in every examination, but again I would say that's a very important, because for the first time we are signing a legal binding agreement, very very important. GST very important, BRICS is important, climate actions, India is acting as a very strong lead in climate action, so that's something that's very very important. Women empowerment, India is working on that thing, so that are the major topics which you need to focus on here. But along with that, I would say one thing that is very important if I talk about with regards to your ESI current affairs will be the theme based questions. Very very important, guys, theme based questions. This is something you should be ready. Now what they are doing at this point of time is they are asking question based on themes here. तो ऐसा नहीं कि एक रिपोर्ट से पूछे, जैसे you can see the question that I was talking about here. There was a news on World Economic Forum's report, ठीक है जी, World Economic Forum की annual summit हुई थी. They have asked a question from that thing, and there they have asked to that World Economic Forum January, India took the mission for gender equity. As I was saying, if India is highlighting something important, that's a part here. So now look at the question they have asked you. First of all, they have asked you that India's mission for gender equity several has been signed at the sidelines of World Economic Forum, which is taking place here. World Economic Forum's annual meeting take place every year in Davos. It's a kind of static based question. You can see here. Now look at the thing. Global Gender for Alliance that I've told you, they have asked a question of this specific report. According to the report, TKG, by the World Economic Forum, what is the primary reason for India's decline in global index ranking? अब ग्लोबल जेंडर गैप को इसी के बीच में उन्होंने खुला दिया। देखो ये क्वेश्चन जेंडर गैप से आया था, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगा के उन्होंने टॉपिक बनाया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जेंडर गैप भी डाला, ग्लोबल जेंडर अलायंस भी डाला, और इस बेस पे उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। दिस इज समथिंग आई वुड से यू शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज दिस इज वेयर दैट इज द मेजर चेंज दैट यू विल विटनेस फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 एग्जामिनेशन। ये मेजर चीज है जो आपको यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा, और इसी के लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना
पड़ेगा। अब आपको जब पढ़ रहे हो तो आपको ब्रॉडर थीम से पढ़ना है, बस यही बोलूंगा कि आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो आपको पता है टैक्सेशन की बात हो रही है, यू शुड बी रेडी अबाउट जीएसटी, यू शुड बी रेडी अबाउट what is direct tax and what is indirect tax. You should be able to understand that thing. What is GST when it was launched? Which committee has recommended GST? That is the thing you have to focus when you are going for phase 2 examination. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं यार यही बोलूंगा कि जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो ना, that is all that is using you are using is fodder. So using all the current affairs that you have read in the phase 1, either schemes, reports, that could be used as a fodder here. Plus, I would say here, your editorials will play a very important role because it's not about how much you cram, it's about how much you present is one thing that is the part of your descriptive answer writing. तो descriptive में आपको हमेशा जो चीज आपने पढ़ी आप कोट करना याद रख लो, कोट करना सीखो, बस हर चीज क्रैम नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि बना बनाया क्वेश्चन है, कुछ जगह पे आएगा, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या है, बना बनाया क्वेश्चन यू कैन टैकल, बट कहीं ना कहीं आपको वहां पे एप्लीकेबिलिटी जो है वो सीखनी पड़ेगी अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन है, रूरल इंडिया नीड्स टू गिव प्रायोरिटी टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब जो भी वुमेन लेड डेवलपमेंट में रूरल कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आई है वो आप सब कुछ यहां पे ऐड कर सकते हो। दैट्स हाउ द थिंग्स कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। सो देयर इज नथिंग आई वुड से कि यार यहां पे कोई ये डायमेंशन है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप कह सकते हो, जिसका निचोड़ निकाल के आपको यहां पे लिखना है, दैट इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव विल बी हियर। ठीक है जी, अब आते हैं कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं। देखो सोर्सेस की बात करो तो स्कीम्स, इफ आई टॉक अबाउट हियर, PIB is a dominating pillar. You will see almost 70 to 80% questions being asked from PIB only. For RBI, I would say Reserve Bank of India is the only key thing. आप RBI की वेबसाइट पकड़िए, वही चीज है। Financial current affairs, it could be the alignment of business standard that you can use for your financial current affairs. For financial editorials can be read from here. And then I would say ESI, Hindu or Indian Express can play a very important role here. But I would say guys, with respect to your paper, for objective compilation is something that you should follow. और अगर आपके पास टाइम है तो आप एडिटोरियल्स उठा लो, बस ये चीज आपको करनी है, बिकॉज इतने सोर्सेज पकड़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं है 15 दिनों में। इन सोर्सेज को मत उठाओ, आप ये पकड़ो, कंपाइलेशन पकड़ो, प्लस आप पर्सपेक्टिव 360 को यूज कर सकते हो फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी, then I would say you can utilize the series of government schemes that we're doing for you. You can utilize 3T 360 classes, specifically वहां पे जो टॉपिक्स सर आपको ESI या FM रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। FM के लिए फाइनेंस 360 पकड़ लो, RBI नोटिफिकेशंस के लिए। I would say if you are watching those series, that can also help you. If you are watching these series for past 6 months, that can also help you. गवर्नमेंट स्कीम्स में अगेन हमने मिनिस्ट्री वाइज अरेंज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्कीम्स न्यूज में आ रही हैं आप उस प्लेलिस्ट में जाके जो है उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया, PIB ऐसे बिजनेस चैनल में ये न्यूज आई थी और यही मैं आपको बताया था। ठीक है, जो सेबी ने चेंज किया था मेजर रूल, सितंबर की न्यूज है ये, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं जी एट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग कि अब 15 दिनों में क्या करना है, अगले 15 दिन क्या करना है आपको। लास्ट 15 डेज की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन 15 डेज में अब आपको कोई चीज ऐसा नहीं है एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। आई वुड नॉट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू नीड टू पुट ऑन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड करंट अफेयर्स फॉर फेज 1, यू हैव ऑलरेडी रेड। जस्ट द थिंग इज दैट नाउ यू हैव टू पॉलिश दैट थिंग। ठीक है जी, तो पॉलिश कैसे करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी क्या सेट करनी है, जब आप ESI की बात करो तो स्कीम्स और रिपोर्ट्स प्रायोरिटी नंबर 1 है। आई वुड से ESI करंट अफेयर्स प्रायोरिटी 2 है, बट अगेन मैं बोलूं यहाँ पे कुछ प्रायोरिटाइज वाइज मत देखना, पढ़ना हमें सब कुछ है, बिकॉज अगेन आई वुड से एज देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न सो यू माइट एक्सपेक्ट अ शॉक दिस ईयर। हो सकता है स्टैटिक पूछ ले, तो स्टैटिक छोड़ के मत जाना भाई, हो सकता है पूछे, बिकॉज WTO में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुका है, PVTGs पे दे हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन, so this is something they might be planning this year, you should be ready for that. Then I would say phase 2 FM, finance, current affairs और RBI notification. Here I would say schemes that you are reading in ESI can be playing an important role here also. बट अगर हम इसको करें, जैसे मेरे को बोला कि सबसे पहले आपको फिल्टर आउट करना है, तो फिल्ट्रेशन में सबसे पहले करना है आपके पास जो भी न्यूज है, स्पेसिफिकली जो ये डाटा ओरिएंटेड है कि इतना इन्फ्लेशन हो गया है, इतना ये हो गया है, लीव दैट न्यूज ओनली इफ इट्स बीइंग हाइलाइटेड इन अ मेजर रिपोर्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। Go with the topic in a broader topic. For example, if you are reading GST, so GST should be read in a one go. It's not that you are reading GST in the month of September, फिर अगस्त में दोबारा पढ़ोगे, नहीं, एक ही गो में GST के सारे न्यूज को आप क्लब करो,
उसको पढ़ो ताकि जीएसटी एज अ टॉपिक शुड बी डन, एंड व्हेन यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स यू शुड आल्सो बी फैमिलियराइज्ड विद द स्टैटिक पार्ट ऑफ दैट टॉपिक सो दैट यू कैन हैंडल दैट थिंग. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइस यू हियर. ये करना ही. अब आपको पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू योर ईएसआई रिपोर्ट्स के लिए. आई वुड से आप 6 मंथ्स को टारगेट करना, 6, 9 और 12. अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपका रिपोर्ट्स पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो गो विद पास्ट 1 ईयर. अदरवाइज आई वुड से इफ यू आर टारगेटिंग 9 months दैट कैन रियली हेल्प यू. 6 month is good. 9 month I would say will be a very better thing. But if you want to somehow go with everything कि नहीं नहीं सब कुछ ही करना है, छोड़ना ही नहीं है, तो I would say then you can target past 1. ठीक है जी. फिर आ जाता है हर न्यूज, बट आपको मेजर टॉपिक्स पे देखना है. ठीक है, आपको हर एक न्यूज नहीं देखना, आपको टॉपिक देखना है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस लिमिटेड है. 30 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के. उसमें से भी अगर मैं बात करूं 5 थीम बेस्ड या 5 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तो वहीं से निकल गए. तो आपके मोटा मोटा 5, 10, 15, 20 न्यूज पे सवाल आएंगे. तो 15-20 न्यूज के लिए आपको हर एक न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको मेजरली देखना है. जीएसटी बार बार न्यूज में आ रहा है, ब्रिक्स बार बार न्यूज में आ रहा है, इंडिया ने यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा. अगर इंडिया हाईलाइट कर रहा है कुछ ईएसआई के लिए, अगर इंडिया इज हाईलाइटिंग समथिंग, सो दैट शुड बी समथिंग दैट यू शुड रीड इन ईएसआई वाला पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. एंड इफ यू आर गोइंग विद फाइनेंस वाला पार्ट, तो इफ सम चेंजेस हैव बीन मेड, चेंजेस हुए हैं कोई बहुत ही बड़े, कोई नया इनिशिएटिव ही लॉन्च कर दिया है, सेबी ने किया है, पीएफआर ने किया है, दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. देन आई वुड से नाउ दिस इज द थिंग दैट यू हैव रेड. अब आपको याद कैसे करना है, आप माइंड मैप्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए छोटे छोटे, सो दैट पॉइंटर फॉर्म्स में फ्लो चार्ट्स हो, आपके फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं. वहां पे आपको पॉइंटर नोट्स बनाने, आपको हर एक चीज नहीं लिखनी. जैसे आपने ब्रिक्स पढ़ा तो मेन पॉइंट लिखो कि ये चीजें इंडिया ने ब्रिक्स में की है. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एससीओ 25 years, so if I talk about just let's talk about BRICS. ठीक है, तो ब्रिक्स में क्या याद रखना है, इंडिया होस्ट है, ठीक है, न्यू विजन ऑफ इंडिया, तो ये बताना चाहिए इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय इंडिया. दैट्स इंपॉर्टेंट. इफ समथिंग मेजर हैज बीन डन, write down that part. If some member has been or something was that's a part here. Now BRICS can be collabed with NDB also. Mr. Rajiv Ranjan, that news can be clubbed here. This is how you have to make the pointer notes here, I would say. ठीक है, because that can be quoted in the descriptive also. आपको हर एक पूरा ग्रंथ नहीं लिखना, आपको अगर डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ ऐसा लिखना है तो आप सिर्फ उन चीजों को कोट करोगे. कैसे करोगे, आपके पास पॉइंटर नोट्स है, वो पॉइंट ही कोट करनी है. At this point of time, practice more and more MCQs. That would be the need of an hour. Practice more and more MCQs. And I would say try to write 1 to 2 descriptive answers daily. One descriptive answer in context of current affairs, try to read them, try to write it daily. ठीक है, in context of the regional topics or in context of the topics which are seen in news. आप करो, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लो यार, उसको बोलो कि मुझे रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में जो टॉपिक्स हाईलाइटेड हो रहे हैं ईएसआई में, एफएम में, मुझे उस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे, तो दैट कैन हेल्प यू देयर. ठीक है जी. और इन सबके बाद ये तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिवाइज द थिंग्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिविजन. इट्स नॉट दैट यू हैव टू क्रैम एवरीथिंग. द थिंग्स मस्ट बी रिवाइज्ड on an alternative so that if you are utilizing it for descriptive, if you are utilizing it for objective, you should be ready for that thing. That is what I would advise you. ठीक है जी, in this last 15 days that should be your priority list. I would not say कि डे बाय डे प्लान जैसा है, बिकॉज जिस तरह से आपने तैयारी की है आपको पता है कैसे डायमेंशंस कवर करने हैं, तो आपको उसी चीज को कैसे करना है, दैट इज हाउ यू शुड मेक योर प्लान हियर. ठीक है, नाउ बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो गाइस, ठीक है जी, सो हाउ एडोटैप इज हेल्पिंग यू गाइस. If you go to the website of Edutap, just go to the courses of Edutap, that is RBI Grade B courses. So now how we are helping you. ठीक है जी, if I say here, if I talk about the course, so we have launched, if you want to just practice the thing, you can go with our phase 2 test series. आपको श्योरिटी कि मैंने लिखा हुआ है, बस मुझे प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स आप दे सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो लाइव इंटरेक्शन भी चाहिए, so you can go with our phase 2 live crash course also, which is dedicated for the RBI Grade B aspirants of phase 2, where you will get the live classes, you will be able to get the solved PYQs, आपके chapter wise test आपको दिए गए हैं for finance, management, ESI, current affairs tests are being given here, your full length tests are being given here, which can help in your preparation. Now when I'm making this video guys, ठीक है जी, there's 71% off is 71 and 76% off we are giving here, but again I would say it will keep on changing. So if you want to avail this courses, तो आप जाके हमारी वेबसाइट पे जाके
इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं. बाकी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग गाइस, just drop us an email at hello@edutab.co.in, or you can also have a call with us on the number 8146207241. ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता देता हूं नंबरिंग. ठीक है, just drop us a call here or just drop us a mail here. So I hope guys this video is really helpful for you, because here we have discussed in pretty much detail about what should be a study day plan, how to approach current affairs, which dimensions are important. I hope this will really help you in making a strategy in this last 15 days, and as well as it will give you clarity that what are the things where you have to focus at this point of time. So on that note, I wish you all the best for the examination guys. Keep working hard, keep preparing hard, and I hope the aspirants who are watching this video, this will really help you to bring you one step closer to your dream of becoming an officer. That is from phase 2 to the interview stage. Chaliye guys, bye bye.